Good afternoon, everyone. Today, me, Yashwardhan Sharma, and my partner, Yuvraj Sharma, are going to present a presentation on the minimalism. The topic minimalism. So, minimalism is important. I think it's relevant in today's era. I think it is relevant in today's era because we are sold the lie of capitalism that we have to buy more to get more satisfied. We are more than being sold products, we are being sold more needs that create dissatisfaction. So minimalism is thus a lifestyle which is focused on simplicity, living with less. This is also in line with some Jainism and Buddhism concepts, as you might already know. So, first of all, starting with, as we have already defined minimalism, we start with the history and origins of it. After the Industrial Revolution in the 1950s and 60s, the origins of minimalist art saw its inception, and then the movements of design emerged. Then, as you can see, in 70s and 80s, simple living philosophies became popularity because people begin to realize that industrialism is well, it's not solving any problems. Instead, it's only creating more. And now today, it's embraced as a way to reduce stress and live more intentionally. There are several books written on this topic. One of them is called Essentialism by Dredd. On the next slide, I would like to pass it on to Yuvraj. After the key origin, we would like to talk about the key principle of minimalism. मिनिमलिज्म का मतलब ही हमको छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढनी पड़ती है। तो जैसे पहला पॉइंट इसका बोल रहा है एसेंशियलिज्म। अब हमको सबसे पहले फोकस ऑन व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट। हमको फालतू चीजों को एलिमिनेट करके जो हमारे लिए हमारी जिंदगी में हमारे जो आने वाले काम करने में आगे जो आवश्यकता हो सकती है चीजों की, हमको उनमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दूसरी चीज है इंटेंशनलिटी, बीइंग डिलिबरेटेड अबाउट पोजीशन एंड चॉइसेस। हमारे पास जो भी है, हमारे जो चूज करेंगे, हमको सब सोच समझ के पहले से ही अपने फ्यूचर के बारे में उनको चूज करना पड़ेगा। ये नहीं कि हम कुछ भी जा रहे हैं मार्केट में कुछ भी उठा लेते हैं। ये हमको पहले से अपने दिमाग में लेके चलना पड़ेगा अब खुद के लिए, अपनी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। थर्ड पॉइंट इज माइंडफुलनेस, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। ये नहीं कि अपने ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं हम वहां बैठे बैठे, ये नहीं होना चाहिए। हमको पहले से अपने दिमाग में लेके चलना चाहिए कि हमको आगे क्या करना है, अपने जरूरत की चीजों को ही अपन को पिक करना चाहिए। चौथा पॉइंट है एप्रिसिएशन। जो हमारे पास है हमको पहले उसको एप्रिसिएट करना चाहिए, ज्यादा के लिए हमको इधर उधर ढूंढना नहीं चाहिए। सबसे पहले भगवान ने या फिर हमारे पेरेंट्स ने हमको जो भी दिया है हमको उसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू ब्रदर। सो ऑन द नेक्स्ट, now that we discussed the features of minimalism, we will go on to the benefits of it. Now there are several benefits, but I condensed it into three, which I found the most relevant. First is the mental and emotional aspect of it, because of reduced stress and anxiety, because of desire for less, and being content with what you have, you have reduced stress and anxiety, and thus increased focus and productivity because your attention is not diverged into million directions, but instead it's converged into something that you truly want to focus it upon. Lastly, it provides you with a greater sense of gratitude because, as Yuvraj already mentioned in the last slide, appreciation is a key feature, and appreciation then leads to gratitude for what you already have. Second, financial, of course, because now you will be content with less, you will buy less, and thus you will have more savings from reduced spending. There will be freedom from debt and consumerism, and the ability to invest in experiences rather than things that you will once buy and then forget about. It's truly a remarkable benefit of minimalism. Lastly, on to environmental aspect of it, there will be a reduced environmental footprint, and because now you are consuming less, you are by default wasting less, and thus it supports sustainable practices. And lastly, increased appreciation for nature, but I think we have already discussed it. मिनिमलिज्म इन लाइफस्टाइल। तो बेनिफिट्स और बाकी पॉइंट्स को देखने के बाद हम अपनी लाइफ में मिनिमलिज्म को कैसे अडैप्ट कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिक्लटरिंग, रिमूविंग अननेसेसरी पोजीशन। हमारे जैसे हमको मेन एग्जाम देने के लिए ब्लैक पेन चाहिए था, हम
अपनी खुद की लाइफ की लाइफ लेके चल रहे हैं, हमको मेन ब्लैक पेन की जरूरत है। लेकिन अगर हम फालतू के पेन वगैरह लेके जाएंगे तो हमें खुद को कंफ्यूजन होगा कि हम कौन सा पेन चूज करें वहीं बैठे बैठे। इसलिए सबसे पहला पॉइंट है डिक्लटरिंग, हमको अननेसेसरी प्रोजेक्ट सबसे पहले हटाना चाहिए। दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारे कैप्सूल वार्डरोब। हमको अगर अपने लिए चूज भी कुछ करना है तो हमेशा वो हाई क्वालिटी का ही रखना चाहिए। ये नहीं अगर अपन ने छोटी सी बकवास चीज रखी है तो अपन को ये सोचेंगे अपन बार बार कि अपन नई नई चीजें लेके जाए। अपन को वो नहीं करना है। अपन को सबसे पहले जो चूज करेंगे वो अपन हमारे लिए बेस्ट में चाहिए, बड़े क्वालिटी करना चाहिए। स्लो लिविंग, थर्ड पॉइंट इज स्लो लिविंग, एम्ब्रेसिंग एंड मोर इंटेंसिव एंड माइंडफुल स्टेट। And the fourth point is digital minimalism, reducing digital distraction and technology uses. हमको ज्यादातर मेन फोकस हमारा व्हाट वी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमको प्रेजेंट में जीना आना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने वो फोन वगैरह में लगे पड़े हुए हैं, उससे देख देख के भी उससे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा और जो अपनी बाकी लोगों की लाइफ स्टाइल देखेंगे उससे हमको ये ओपीए पैसे के कारण हमको भी ये लगेगा कि हमारे पास ये क्यों नहीं है। तो सबसे लास्ट पॉइंट हमारी ये है कि डिजिटल मिनिमलिज्म। Exactly, I agree. Now to the next slide. If we apply the concept of minimalism in the area and domain of design and architecture, there is an increasing trend of interior structure, products, and architecture being designed on the basis of minimalism. Now, first of all, on the interiors, they prioritize functionality, open space, and natural materials. I am much more of a minimalist myself, and even if you look at the slab, there is not much details, unnecessary details from a say to myself. It's a clean room with a single tone color, actually dual tone, but it's just a different shade, and it looks much more presentable and professional. Next on to products, focusing on essential features and timeless aesthetics. So as you can see, each year Apple comes out with a new iPhone, and it's it's getting increasingly minimal. It's removing things instead of adding. It's adding by subtracting, and that still gains popularity. Lastly, on to architecture, it emphasizes form, light, and connection to the environment, which is somewhat related to interior. Yes, that's where I would like to move on to the next slide. So the next slide says steps to start minimalism in lifestyle. हमको अपनी जिंदगी में अब आगे चल के हमने देख के लेके बेनिफिट क्या होता है, minimalism क्या होता है, फिर अपनी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर है हमको वो देखना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट है एक्टिव, इवेलुएट योर करंट पोजीशन एंड लाइफस्टाइल। हमको सबसे पहले अपने परिवार वालों ने या भगवान ने हमको क्या दिया हमको सबसे पहले वो देखना पड़ेगा। अगर वो हमारे लिए नेसेसरी है इसमें हमको उनमें संतुष्ट रहने के लिए हमको मानना पड़ेगा। ये नहीं कि बिना वजह पैसे खर्च करे जा रहे हैं हम। सेकंड पॉइंट इज डिक्लटर, रिमूव अननेसेसरी आइटम्स। जैसे पहले बताया गया है कि अगर आपको अगर एक ही पेन की जरूरत है एग्जाम में जाने के लिए तो हमको उसी पे फोकस रहना चाहिए। ढेर सारे वो कंपनी से पेन वगैरह हमको लेके नहीं जाना चाहिए, हम उनको साइड रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज कल्टिवेट, डेवलप मिनिमलिस्टिक हैबिट एंड माइंडसेट। हमको अपना माइंडसेट ऐसे डेवलप करना चाहिए कि हमको छोटी छोटी चीजों में कुछ नहीं चाहिए। All right. So now you might say, why should we follow this lifestyle? What are some actual examples that this lifestyle application has actually improved people? So the minimalist lifestyle, first of all, by the minimalist family, right? Downsizing to a smaller home and living with less. I think it's much self-explanatory that it does not need further elaboration. Secondly, onto the minimalist entrepreneur. Often, even in our curriculum in costing and other subjects, we were taught how businesses can streamline processes and in SM and costing specifically, we were taught how we can streamline the processes and focus on the essential work, cut down on the costs that are unnecessary to focus on what is truly important. Doing more with less. The minimalist traveler, yes, this is important, but a minimalist traveler packs light and embraces experiences over possession, because often when we travel, we carry too much baggage, which is much more than we require. Even I, personally experience this. I sometimes, whenever I travel, I put much more possessions than I require, and when I come home, I realize that I didn't even use it. Lastly, the minimalist wellness advocate. This is also self-explanatory story, so we just move on to the next slide. Thank you, Ashwardan. So the next slide is about minimalism and mental health.
हमने म्यूजिक को अडेप्ट कर लिया, उसके बेनिफिट जान लिए, लेकिन फिर बाद में हमारी मेंटल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकता है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट बोलता है रिड्यूस स्ट्रेस। हमने जब पहले ही सोच रखा है कि हम वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ लेंगे, हमको ब्रह्मांड की चीजों में ज्यादा ऐसे उलझने की शौक नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होगा। बाकी चीजों में अगर हम ध्यान नहीं देंगे, शोर साल में अगर हम नहीं सोचते रहेंगे, तो ऑब्वियसली वो दैट विल हेल्प इन आवर रिड्यूसिंग स्ट्रेस इन। The second point is increase focus. हम बाकी चीजों पे हमने वैसे ही ध्यान हटा दिया है, हम फिर अगर हमारा मेन फोकस हमारे केरियर पे रहेगा, तो वो दैट विल ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग फोकस। अगर वही है, अपन बाकी चीजों में ध्यान देते रहेंगे, तो दैट विल रिड्यूस आवर फोकस। एंड थर्ड पॉइंट इज माइंडफुलनेस, एम्ब्रेसिंग द प्रेजेंट मोमेंट एंड एप्रिशिएटिंग व्हाट एसेंशियल। ये पहले बता दिया गया है कि बाकी चीजों में ध्यान ना देते हुए प्रेजेंट में जीना सीखें। Appreciated Yuvraj. Next slide is challenging misconceptions. Now, often there are limiting beliefs regarding minimalism. Like it is not for not just for the rich. First of all, people think that it's just for the rich. But the concept of minimalism is to be happy with what you have rather than wanting more. So by definition, you don't need to be rich for it. Wherever you are, you can experience minimalism. Secondly, it's not just about stuff. It is a lifestyle. It is not just about material possessions. Lastly, it's not temporary because it's a long-term commitment, not a passing. The goal is not to just lose your possession for the time being, but be happy with what you have for the entirety of life that you are going to live. So the next slide says about minimalism in finances. Explore the benefits of a minimalistic approach to personal finance, from reducing clutter to achieving financial freedom. That's all. On to the last slide, we want to conclude it. So, whatever we spoke in this presentation, it can be condensed into these 6 points. First of all, minimalism is definitely a transformative lifestyle, and it promotes intentionality and mindfulness. You will be aware of every moment because you don't have a lot of things to worry about. The lesser you have, the more converge your attention. Thirdly, it can be applied to various aspects of your life. As we saw, as you just told us about minimalism in finances, we saw minimalism in design. It can thus be applied to various aspects of life. It helps to reduce stress, increase focus. It offers financial and environmental benefits, as already discussed in the previous slide. Lastly, we have to start small and embrace the journey. People try to do everything in the first step. Your first step will not be the right one. Everyone that you look up to had a really bad first step, and so will be yours. But if you just trust the process and keep on to it, you will achieve your goal. So, thank you.